Last time we discussed all required theory which was needed to solve our present day assignment. Everybody please pull out the assignment. We will try our best to cover the assignment. Distribute the assignment as fast as possible. Place the assignment on your table, notebook on your table and nothing else. Please declutter your table. और कोई एक्स्ट्रा चीज ना पड़ी हो, ना कोई बुक पड़ी हो, ना कोई ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा हो, only notebook, assignment and pen. Shabash, get ready. I am not wasting a single minute. I am going to proceed. We have lots of questions. Let's discuss questions one by one. From the first question onward. Question 1, bete. He says the distance between the object and the image in the plane mirror is 6 meters. If the object moves 1 meter towards mirror, then the new distance between the object and the image will becomes how much? Let me explain the meaning of the statement of question. Shabash, your attention. अगले क्वेश्चन से मैं आपसे पूछूंगा. Look here, there is the object and there is the image. Got it? He says the overall gap between the object and the image is equal to 6 meters. This is given to us. Now, according to question, he says object moves to a new position that it is 1 meter closer. तो ऑब्जेक्ट व्हाइट से येलो पोजीशन में आ गया और कितना मूव करा बेटे 1 मीटर. तो नेचुरली इमेज विल आल्सो कम 1 मीटर फॉरवर्ड टुवर्ड्स मिरर. वो भी कितना आएगा 1 मीटर. अब यहां से ये डिस्टेंस हमसे पूछा हुआ बिटवीन द न्यू पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट. जो येलो वाला इमेज और ऑब्जेक्ट है उन दोनों में कितना गैप है? Is there any student who can tell me the answer? शाबाश बेटे. ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे चला गया, इमेज भी 1 मीटर आगे आ जाएगा नेचुरली. तो ऑब्जेक्ट और इमेज की नई पोजीशन में कितना गैप हो जाएगा? ऑलरेडी दिस गैप वाज 6 मीटर व्हाइट और व्हाइट में. एनीबॉडी इन द क्लास? नहीं बोल रहे. ध्यान से देखो बेटे. आपको कहना चाहिए सर देखो टोटल आपका 6 मीटर था, ये 1 मीटर आगे चला गया. तो यहां से आपका ये वाला डिस्टेंस जो आप पिंक कलर से मेंशन कर रहे हो ये 5 मीटर रह गया. बिल बिल नहीं 5 नहीं, हाफ 3 का हाफ. 3 में से एक 2 मीटर. क्योंकि अगर टोटल 6 मीटर है ना बेटे, गौर से देखो इधर वाला 3 मीटर था, इधर वाला भी 3 मीटर था. तो उसमें से ये 1 मीटर आगे चला गया तो ये 2 मीटर रह गया. और उधर भी येलो वाला जो इमेज है वो भी 2 मीटर होएगा. क्यों? इन द प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर इक्वी डिस्टेंट. दोनों की बराबर दूरी होती है. तो ओवरऑल गैप कितना हो गया बेटे? 2 मीटर प्लस 2 मीटर. आंसर इज 4 मीटर. 4 मीटर इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. शाबाश, एवरीबॉडी राइट डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन 4 मीटर. Better please settle down Pascal section. Please settle down as quickly as possible. Napier also. तो हमने अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन करा. आप लोगों को असाइनमेंट थोड़ा लेट मिला है. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. बच्चे इनिशियली द व्हाइट वाज ऑब्जेक्ट and white was the image and mirror used was plane mirror. Overall gap between the two was 6 meter. All of you know that image and object are equidistant. Therefore 6 का हाफ कितना होता है? 3 मीटर. तो ये भी 3 मीटर हुआ व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और व्हाइट इमेज का डिस्टेंस भी 3 मीटर हुआ. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोलता है ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर. ऑब्जेक्ट को 1 मीटर मूव करवा दिया
टुवर्ड्स द मिरर। ओके, तो कर दिया। तो 3 मीटर में से 1 मीटर माइनस कर दो, तो नया वाला जो ऑब्जेक्ट है येलो वाला, उसका इमेज से कितना दूरी रह गया? 2 मीटर। 3 मीटर माइनस 1 मीटर, 2 मीटर हो गया। और नेचुरली इमेज भी कितना हो गया? 2 मीटर। तो ओवरऑल गैप कितना हो गया येलो ऑब्जेक्ट और येलो इमेज में? तो आप कहोगे सर 2 + 2 = 4 मीटर। 4 मीटर ध्यान सर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी डन। ओके, क्वेश्चन सेकंड ऑलरेडी डन। उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, वो कि 60 डिग्री हो गया, लास्ट टाइम हमने कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। शाबाश, योर अटेंशन। क्वेश्चन 3, अ पर्सन is able to see full length image in the mirror that is half its height. This is possible because image is magnified, mirror reflects light, angle of incidence equal to angle of reflection, image is virtual and upright. अब क्वेश्चन का मीनिंग समझो बेटे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक इंसान है, उसको अपनी बॉडी का फुल वॉल इमेज मिरर में देखना है। तो उसके लिए जो मिरर चाहिए वो इंसान की हाइट का आधा मीटर ही चाहिए होता है। ध्यान से सुनो, क्या कहता है वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी लड़के की हाइट मान लीजिए 6 मीटर है, 6 फीट, सॉरी 6 फीट उसकी हाइट है, और वो दीवार के साथ ऐसे चिपक के खड़ गया, तो कमरे की दूसरी दीवार के ऊपर जो मिरर लगेगा कम से कम हाइट का, जिसमें उसको अपनी प्रॉपर हाइट दिख जाएगी। तो ये जो हाइट है, ये मिरर की हाइट बेटे, प्लेन मिरर, मिरर की हाइट बंदे की हाइट का हाफ होता है। मतलब के 6 फीट का हाफ, मतलब के 3 फीट। अगर ये लड़के की हाइट होती 5 फीट, तो मिरर की हाइट चाहिए होती 5 का हाफ, 2.5 फीट। अगर इस लड़के की हाइट होती 4 फीट, तो मिरर की हाइट होती 2 फीट। बेटे सारे बच्चे अटेंटिवली सुन लो, अदरवाइज मैं आपको नोट कर रहा हूँ कौन सा बच्चे क्लास में रोम कर रहा है, कौन सा अच्छे से पढ़ रहा है, कौन सा नहीं। आई विल सेंड द वीडियो टू योर प्रिंसिपल। वेरी स्टूडेंट, एवरीबॉडी शुड बी अटेंटिव। कोई पीछे मुड़ के ना देखे, सारे बोर्ड पे देखें। तो ये था आपका, हमेशा याद रखना है, जो पर्सन की हाइट होती है उसकी हाइट का हाफ चाहिए होता है मिरर की हाइट। और इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी दे सकते हैं। और इसका प्रूफ किस चीज के ऊपर बेस्ड है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चीज के ऊपर बेस्ड होता है इसका प्रूफ। ठीक है, लेकिन प्रूफ मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि आपकी क्लास अभी छोटी है, अभी प्रूफ आपकी क्लास में नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि इंसान की हाइट का जितना हाइट होता है उससे हाफ, आधी हाइट का मिरर चाहिए होता है कम से कम, ताकि इस इंसान को अपनी फुल बॉडी साइज इमेज मिरर में देखा जा सके। और इसका प्रूफ हम, ये रिफ्लेक्शन का जो लास्ट था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे प्रूव किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सभी बच्चे। रीड द असाइनमेंट, रीड द असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक प्लेन मिरर है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि एक पिन के रूप में है। और यहां से रे ऑफ लाइट गई और इंसान को यहां पर दिखी, जिसकी आंख यहां पर है, यहां पर इसकी ह्यूमन आई है। तो इस इंसान को पिन का इमेज देखना है। योर अटेंशन,
दिस रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग फ्रॉम द पिन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो रे इंसान की आंख में एंटर कर रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर पेपर में 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट दिया पी, एक पॉइंट दिया है क्यू, और एक पॉइंट दिया है आर। कह रहा है इस ऑब्जर्वर को इस पिन वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर दिखाएगा, कहां पर दिखाई देगा? क्या वो इसको इमेज पी पॉइंट पर दिखाई देगा, या क्यू पर दिखेगा, या आर पर दिखेगा? योर अटेंशन, डोंट टर्न योर हेड ऑन बैक साइड। सभी बच्चे फ्रंट पे देखें, बैक पे ना देखें बेटे, मैं नोट कर रहा हूं आपको। ओके, ध्यान से सीख लीजिए बेटे। आपको इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? आप कहोगे सर आपने एक स्लाइड की प्रॉपर्टी पढ़ी है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। मैं कहूंगा बेटे हाँ पढ़ी है। क्या मतलब होता है इसका? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मीनिंग होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो आप बोलोगे सर ये जो ऑब्जर्वर की आंख में रिफ्लेक्टेड रे आई है ना, तो ऑब्जर्वर की आंख सोचेगी ये मेरे को लाइट यहां से दिख रही है आती हुई, स्ट्रेट लाइन आर पॉइंट से दिखती हुई आ रही है। उसको लगेगा स्ट्रेट लाइन आर पॉइंट से आ रही है। इसका मतलब जो हमारा पिन रूपी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमें आर पॉइंट पर दिखेगा। इमेज विल बी एट आर पॉइंट। सर आपने कैसे सोच लिया ये आर पॉइंट पर होएगा, क्यू पे क्यों नहीं होएगा, पी पे क्यों नहीं होएगा? क्योंकि अगर मैं पी के ऊपर जाता हूं तो मेरे को लाइट को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, और क्यू पे जाता हूं तो भी मोड़ना पड़ेगा। लाइट को तो स्ट्रेट रे में रखना होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो इसकी इंसान की आंख को यहां से लाइट आती दिखेगी, तो ऑब्जेक्ट का इमेज आर पॉइंट पर दिखेगा। सभी बच्चे लिख लो क्वेश्चन नंबर 4 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में सी ऑप्शन बेटे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक लड़का है अक्षय, उसने टॉय रखा हुआ है। देखो गौर से देखो, मैं बुला रहा हूं इसके लिए पढ़ने के लिए आपको। ठीक है बेटे, हार्डी सेक्शन में युवराज सिंह है। हार्डी सेक्शन युवराज सिंह, प्लीज रेज योर हैंड एंड कम ऑन दी माइक। हार्डे, हार्डे सेक्शन में युवराज सिंह कौन है बेटे? नो वन स्पीकिंग। ओके, पास्कल सेक्शन में नवप्रीत कौर। नवप्रीत कौर, पास्कल सेक्शन, प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 5 की, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़नी है आपको। Jessica keeps a toy in front of plain mirror. She then looks at the mirror to see the image of the toy. यस, सिट डाउन। तो आपको उसने ये 3-4 पॉइंट दे दिए, 1 2 3 4, और इधर रखा हुआ है टॉय, और बीच में हमारा है प्लेन मिरर। अब हमको बोलता है एट व्हाट पॉइंट विल द इमेज ऑफ द टॉय विल बी सीन इन द मिरर। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो जाए तो उसको कौन से पॉइंट पर इसका इमेज दिखेगा? शाबाश। क्या इस टॉय का इमेज 1 पे बनेगा, या 2 पे बनेगा, या 3 पे बनेगा, या 4 पे बनेगा? ठीक है। तो आप देखो बेटे, आप इसमें क्या करोगे पता है? आप बोलोगे सर इतनी बात आपको पता है कि जितनी दूर टॉय पड़ा होता है उतनी दूर ही उसका इमेज बनता होता है, ये पता है आपको? मैंने कहा बेटे कैसे पता है आपको? आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर नॉट ओनली ऑफ इक्वल साइज, वो इक्वल साइज भी तो होते हैं और इक्वल डिस्टेंट भी होते हैं।
इक्वी डिस्टेंट, मिरर से बराबर की दूरी पर होते हैं। जितनी दूरी ये होगी आपकी v वाली, उतनी ही दूरी आपकी u वाली होगी। यहां से यहां तक जितना u होएगा उतना ही v वाला दूरी होएगा। u इज इक्वल टू v, इक्वी डिस्टेंट होंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर लेकिन मेरा ऑब्जर्वर तो यहाँ खड़ा है, तो आप कहोगे आपका ऑब्जर्वर की आंख यहाँ पर है ना, तो यहां से चलेगी लाइट ऐसे, देखो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को, तो आपको उसका इमेज टॉय का यहाँ दिखना चाहिए सेकंड पे, क्योंकि ऑब्जर्वर यहीं पर खड़ा हुआ है। तो इमेज आपका 1 पे नहीं बनेगा, 3 पे नहीं बनेगा, 4 पे नहीं बनेगा, इमेज विल बी फाउंड एट 2 पोजीशन। तो इसका मतलब ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन हुआ। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इट विल बी, ये जो टॉय का इमेज होएगा इसके फीचर्स क्या होते हैं, सभी बच्चों को पता है बेटे। टॉय के अंदर जो इमेज बना है ना, प्लेन मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनता है उसकी क्या क्या खूबी होती है। पहली बात, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है, साइज बराबर, ओके। दूसरा, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज होता है, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट। तीसरा, इस इमेज को हम हाथ नहीं लगा सकते मिरर की बैक साइड पर जाकर, इसलिए इमेज हमारा वर्चुअल होता है, वर्चुअल, रियल नहीं होता। चौथा फीचर क्या है बेटे, अगर इस टॉय ने अपना, अगर इस टॉय ने अपना राइट हैंड ऊपर उठा रखा है तो उसके इमेज ने लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया होता है, लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट का राइट बन जाता है, राइट का लेफ्ट। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्लेन मिरर में स्टडी करने। अब देखो हमारे के अंदर वो कह रहा है विच टाइप ऑफ इमेज इट विल बी, हमने सिलेक्ट करना है रियल एंड अपराइट, ना रियल तो होता नहीं है। वर्चुअल एंड अपराइट, बिल्कुल ये सीधा ऊपर को है, वो भी उसका मुंह भी सीधा ऊपर को है, इसलिए अपराइट भी बनेगा। वर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है बेटा, वर्चुअल एंड अपराइट। तो पांचवें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट, पांचवें क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट है, उसका हो गया वर्चुअल एंड अपराइट बी पार्ट, और पांचवें में भी एक थर्ड पार्ट भी है ना, दो ही है बस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व हुआ। ओके बेटे, तो आपको ये समझ आ गए दोनों क्वेश्चन 4 एंड 5? इफ यस प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। और अगर दोनों हाथों में से कोई भी नहीं समझ आना तो आप क्लास में खड़े कर दिए जाओगे, दोनों में से एक हाथ आपको खड़ा करना ही है, आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। राइट हैंड तब खड़ा करना अगर समझ आ गया। आई एम आस्किंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ थेल्स, मैम को बोलता हूँ मैम प्लीज अब देखो बच्चों को हाथ कौन से खड़े हैं, यस। अब आपकी बात मानी, रामानुजम के स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आइदर रेज योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड तब आपको जब समझ आ जाए। बेटे रामानुजम सेक्शन के बच्चे प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, शाबाश। चलो आगे चलेंगे। अब हमारे पास कॉलम मैचिंग है, कॉलम मैचिंग, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन देखो। ये मैं इसके लिए बुला रहा हूं, थेल्स में से एक बच्चा है रमनीत कौर, थेल्स, प्लीज कम ऑन द माइक, रमनीत कौर। बेटे थेल्स क्लास में से कौन सा बच्चा है रमनीत कौर, वो माइक पे आ जाए। आ ही नहीं रहा बच्चा, लेजी स्टूडेंट है कोई। पास्कल क्लास में से परमवीर सिंह, पास्कल क्लास में परमवीर सिंह, शाबाश, प्लीज कम ऑन द माइक। ये होता है एक्टिव बच्चा। बेटे कॉलम मैचिंग करना है हमने, हम आपकी मदद लेंगे, शाबाश। सबसे पहले उसने इस साइड पर और साइड पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इस साइड पर उसने लिखा हुआ है ABCDE, और इधर लिखा हुआ है बेटे 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं कौन सा किससे मैच करता है। शाबाश। पहली साइड पर यहाँ पर ए वाले में लिखा हुआ है उसने प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। शाबाश बेटे, आप बताओगे प्लेन मिरर के सामने मैं किसको ऑप्शन को पिक करूं कॉलम मैचिंग में? कॉलम मैचिंग में जल्दी से छांटो। क्या ये यूजर यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास? नो। कैन फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया? नो। कन्वेक्स लेंस, फिर उसमें लिखा यूज्ड बाय द डेंटिस्ट? नो। दिस इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड? नो। दिस इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज? शाबाश। फोर्थ ऑप्शन में सिक्स भी है, सिक्स भी है। तो ए का फोर्थ ये गया हमारा फिफ्थ में गया, फिफ्थ में गया बेटे। और यहां पर लिखा हुआ है इमेज विल बी, इमेज विल बी इरेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब अप, अपराइट एंड सेम साइज। बिल्कुल सही, क्योंकि प्लेन मिरर में ये होता है। बैठ जाओ बच्चे अब अपनी सीट पे। सेकंड देखो आप, कन्वेक्स मिरर, सेकंड कॉलम में यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है। देखते हैं कौन बच्चा इसको कैच करता है। ए के सामने हमने फिफ्थ लिखा आंसर में, ए के सामने फिफ्थ, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं बी के सामने क्या लिखते हो। कॉन्वेक्स मिरर में कौन बच्चा बताएगा? शाबाश। कन्वेक्स में यहां पर लिखा हुआ है यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और सेकंड लिखा हुआ है कैन फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, इमेज को बड़ा भी कर सकता है। यस। बताओ कौन सा आएगा बी के सामने? बोलो बेटे, बी के सामने कौन सा आएगा? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है? नहीं पता? थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं फिर। अगर हम आगे चलें, यहां पर लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसमें लोग, बुजुर्ग लोग न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हैं अक्षर को बड़ा करके। ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज होएगा। ये इधर लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जो अक्षरों को बड़ा कर देता है। इसका मतलब सी के सामने हम फर्स्ट लिखेंगे। ओके, डी देखते हैं क्या है बेटा। डी कॉन्वेक्स मिरर, फिर से यहां पर कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है अगले में। कॉन्वेक्स मिरर, और यहां पर लिखा हुआ है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। देखते हैं इनके सामने कौन सा पड़ता है बेटे। शाबाश। सी के सामने हमारा फर्स्ट पड़ा। देखो एक चीज ध्यान से देखो, हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखी हैं असाइनमेंट में, उसकी सी ऑप्शन देखो। सी ऑप्शन इन दोनों से मैच कर रही है। फर्स्ट पर 5 और सेकंड थर्ड पर 1। सी ऑप्शन में और कोई हमसे मैच ही नहीं कर रही। इसका मतलब बाकी हम फटाफट से लिख सकते हैं, बाकी चीजें हम सारी फटाफट से लिख सकते हैं। कौन सी? के कौन सा बी के ऊपर आएगा हमारा सेकंड ऑप्शन से ही देख सकते हैं। ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, आपने देखा रियर व्यू मिरर लगा होता है व्हीकल्स की साइड के ऊपर। हमारा स्कूटर है, एक्टिवा है, कार है, उसकी साइड पर जो व्हीकल होता है वो हमारा कन्वेक्स रियर मिरर, मिरर पूरी सड़क का सीन दिखा देता है। इट कवर्स द लार्ज एरिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैन फॉर्म
इमेज ऑफ लार्ज एरिया, तो ये भी हमारा मैच कर गया। अब आगे आ गया हमारा एक और, देखो डी के ऊपर, सी भी कवर हो गया बेटे। अब डी के ऊपर देखो, डी कॉन्वेक्स मिरर, डी के ऊपर हमारा आएगा यस, और ई के ऊपर हमारा कौन सा आएगा, सिक्स आएगा ई के ऊपर। ई के ऊपर हमारा सिक्स आएगा। जानते हो क्या लिखा हुआ सिक्स के ऊपर? लेट मी टेल यू सिक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ। द इमेज इज इरेक्ट स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, जो इमेज होएगा वो सीधा बनेगा, कॉनकेव लेंस है यहाँ, कॉनकेव लेंस, यस सीधा बनेगा, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनेगा। ये आपको याद रखना है बेटे। तो इसका मतलब हो गया हमारा ई के ऊपर आ गया सिक्स। अब हमारा डी बचा, बस डी इसमें से ही देख लो ऑप्शन, डी हमारा हो गया थर्ड। तो बच्चा बोलेगा सर थर्ड पे लिखा क्या हुआ वो तो बताओ। थर्ड पे लिखा हुआ है डी के ऊपर कि जो दांत ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट लोग, ठीक है, डेंटिस्ट लोग जो होते हैं वो इस शीशे को यूज करते हैं बेटे, ठीक है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डी के ऊपर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब कोई ऐसी जगह भी है जो ये लिखी हुई है ये बिल्कुल खाली जाएगी? बिल्कुल यस, अगर कुछ लिखा भी हुआ है तो ये खाली जाएगी पेपर, क्योंकि पांच के सामने हम पांच ही लिख सकते हैं ना यूजुअली। ओके, तो सभी बच्चों को ये नोट कर लेना चाहिए कॉपी पे। सभी बच्चे प्लीज नोट डाउन, ये वाला आंसर है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है बेटे, वो भी पैराग्राफ वाला है, कनिका। ये एक बच्चा है कनिका, ध्यान से सुनो। कनिका एक बच्चा है, और इस कनिका के बच्चे ने क्या देखा, कनिका फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके जो पापा हैं उनका एक्सीडेंट हो गया बेटे, पापा का एक्सीडेंट। ओके, फिर क्या हुआ, फिर उनका जो एक्सीडेंट होने से द हेडलाइट एंड रियर व्यू मिरर ऑफ द स्कूटर, उसके पापा का स्कूटर का हेडलाइट और रियर व्यू टूट गया। तो उसके पापा के पास क्या था, स्कूटर था एक्सीडेंट के वक्त, तो स्कूटर का रियर व्यू मिरर टूट गया, ब्रोकन, और हेडलाइट भी ब्रोकन होगी स्कूटर की, हेडलाइट ब्रोकन। ऐसे बताया हमें अभी तक, बोला एक बच्चा है कनिका, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया स्कूटर का, स्कूटर का रियर व्यू भी टूट गया और हेडलाइट भी टूट गया। ओके, द मैकेनिक, अब वो उसके पापा नेचुरली मैकेनिक के पास जाएंगे, और कनिका भी पापा के साथ चलेगी मैकेनिक के पास, ठीक है। तो जब ये कनिका कनिका और इसके पापा दोनों मैकेनिक के पास खड़े हुए थे, तो मैकेनिक ने क्या करा, उनके स्कूटर का जो रियर व्यू मिरर था, रियर व्यू मिरर, तो वो मैकेनिक क्या करने लगा, मैकेनिक उस मिरर को प्लेन मिरर से रिप्लेस करने लग गया, प्लेन मिरर, नया मिरर लगाने लग गया, लेकिन प्लेन। अब ऐसा करते ही कनिका ने उस मैकेनिक को रोक दिया, वो कहती है अंकल रुक जाओ, आपको पता नहीं है ये रियर व्यू मिरर है, इसमें प्लेन मिरर नहीं लगता, इसमें दूसरा मिरर लगता है। तो कोई बच्चा बता सकता है, कनिका उस मैकेनिक को प्लेन मिरर रोकने से रोक देती है, लेकिन कौन सा मिरर लगवाना चाहिए कनिका को? एनीबॉडी? रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर लगा होता है बेटे? मैं बताना चाहूंगा, शाबाश, एक बच्चे का हाथ खड़ा है पास्कल में, प्लीज कम ऑन द माइक। हाँ ग्रीन टी शर्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे, माइक पे आके बताओ अगर इतने कॉन्फिडेंट हो। शाबाश, ये तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है। रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर लगता है?
है बेटे? Convex. कॉन्वेक्स लगता है, बिल्कुल सही। तो रियर व्यू मिरर जो होता है ना, वो प्लेन मिरर नहीं होता, बल्कि बाहर को उभरा हुआ होता है, कॉन्वेक्स लगना चाहिए। इसीलिए कनिका ने उस मैकेनिक को रोक दिया। हालांकि उसके पापा को भी ये बात नहीं पता थी, ठीक है, फादर को भी नहीं पता थी। ही एक्सप्लेन द इनकन्वीनियंस टू द डॉक्टर विल फेस्ड बाय। और उसने बता दिया कि पापा, अगर आप कन्वेक्स मिरर नहीं लगाओगे तो आपके रियर व्यू मिरर में से पूरी सड़क का इमेज नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हो सारी सड़क का लार्जर एरिया का इमेज कवर करो, तो आपको यहाँ पर जो कांच लगाना चाहिए वो बाहर को उभरा हुआ होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए बेटे। ये वो एक्सप्लेन करेगी। ओके। ये उस इस इसकी वजह से इस कनिका ने मैकेनिक को रोक दिया। तो रियर व्यू मिरर शुड ऑलवेज बी कॉन्वेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी देखते हैं। इसको बंद कर दो। शाबाश बेटे, आगे चलते हैं। एक बच्चा है रोहन। शाबाश, ये कोई बच्चा है रोहन। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, सेकंड पेज पे। सेकंड पेज, क्वेश्चन नंबर 3। रोहन के पापा की ग्रोसरी शॉप है। इसके जो पापा है उनकी करियाने की दुकान है बेटे। ऐसे पूरी बड़ी लंबी चौड़ी शॉप है, और उसके पापा यहाँ काउंटर पे बैठते हैं, पैसे कुसे काटते हैं कस्टमर की। ये क्या है? ग्रोसरी शॉप। ये इसके पापा बैठे हैं रोहन के। ओके। फिर वो क्या कहते हैं, रोहन ने अपने पापा को बोला, पापा आप दुकान में एक सिक्योरिटी मिरर क्यों नहीं लगाते? अगर आप दुकान में सिक्योरिटी मिरर लगाओगे तो दुकान के अंदर बैक साइड पर जो कोई वर्कर हमारे काम कर रहे हैं, उनकी फोटो हमें दिखती रहेगी, और कोई चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन वर्कर्स की हमें फोटो दिखेगी। किस में दिखेगी? रोहन अपने पापा को बोलता है, पापा सिक्योरिटी मिरर लगा लो। सिक्योरिटी मिरर, उससे आपको काउंटर पे बैठे हुए अपने बैक साइड पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं दुकान में, उनकी फोटो दिखती रहेगी। अगर कोई चोरी करेगा, थेफ्ट केसेस होंगे, तो एकदम से आप पकड़ लेना और उस वर्कर को दुकान से निकाल देना, उसकी जॉब खत्म कर देना। अब वो बोलता है, उसके पापा कहते हैं, ये सिक्योरिटी मिरर क्या होता है भाई? तो ये रोहन अपने पापा को क्या जवाब देगा जब उसके पापा ने पूछा ये सिक्योरिटी मिरर क्या होता है? शाबाश, एनीबॉडी, कोई ऐसा बच्चा जो इसका जवाब दे सके। नेम द टाइप ऑफ द मिरर रोहन सजेस्टेड टू फादर। शाबाश, एनीबॉडी क्लास में? बेटे बिल्कुल वही, इसके पापा को सारी दुकान का लार्जर इमेज दिखाया। पूरी बैक साइड का लार्जर इमेज कब दिखता होता है? अगर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करें। कॉन्वेक्स मिरर की ये खूबी, जो रियर व्यू मिरर वाली खूबी थी, कॉन्वेक्स मिरर का जो व्यू है वो ही यूज करेगा तो दुकान का सारा इमेज दिख जाएगा। तो आप में से कोई बच्चा बोले, सर इसका मतलब अगर मैं कबाड़ी की दुकान से किसी स्कूटर का रियर व्यू मिरर खरीद के अपनी शॉप में लगा दूं, तो क्या मेरे पापा वर्कर्स को काम करते हुए देखते रहेंगे? बिल्कुल देखते रहेंगे। दुकान में अगर चोरी होगी, उनको पता लग जाएगा और बच जाएगा। तो याद रखना, सिक्योरिटी मिरर इज दी कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इस मिरर की खूबी होती है, ये लार्जर एरिया का इमेज दिखाता है। हालांकि वो इमेज छोटा दिखता है, छोटा जरूर दिखता है, लेकिन लंबी चौड़ी दुकान का इमेज एक ही मिरर में दिखा देता है। गॉट इट? जिन बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। आई एम आस्किंग अगेन, रिचर्डसन, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर हैंड। बिल्कुल सही, शाबाश। शाबाश, पास, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। पास्कल में बॉयज की एक लाइन को छोड़कर बाकी सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। पास्कल सेक्शन नहीं पढ़ रहा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे।
पेज नंबर सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है बेटे, आपने कन्वेक्स मिरर देखा हुआ है सड़क के किनारों पर। देखो ऐसे सड़क जाती है ना बेटे हिमाचल में, तो जब यहाँ से व्हीकल आता है, जीप जा रही है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर टर्निंग्स के ऊपर। जानते हो क्यों लगा होता है? क्योंकि जो इधर से कार आएगी उसकी फोटो यहाँ से इस ड्राइवर को दिख जाए, और जो इधर से कार जा रही है उसकी फोटो कन्वेक्स मिरर में इस ड्राइवर को दिख जाए। तो दोनों तरफ से अगर ड्राइवर्स को फोटो दिखेगी टर्निंग के ऊपर, तो एक्सीडेंट्स अवॉइड करे जा सकते हैं। ड्राइवर्स पहले ही चौकन्ने हो जाएंगे, रोड एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। इसलिए हिल एरिया में यहाँ पर पोल के ऊपर बड़े साइज के कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं बेटे। बड़े साइज के कन्वेक्स मिरर, लार्जर साइज, सभी बच्चों ने याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमने ओलंपियाड की बुक से उठाया बेटे। ओलंपियाड एंट्रेंस टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये ये कर लिया हमने क्वेश्चन 5 बेटे। हाँ, ये कर लिया था बेटे हमने। एक बार फिर से बता देता हूँ चलो। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये मिरर है, यहाँ पर 40 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये वाला मिरर है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेट लाइन है, और टीचर ने आपको समझाया था कि ये जो इंसिडेंट रे जा रही है यहाँ पर भी एंगल 40 डिग्री बनेगी, क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं बेटे। ओके। और यहाँ से नॉर्मल क्या करेंगे, ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री। ओके, बाकी के क्वेश्चन हम अगली बार करेंगे। बाय बाय, थैंक यू। Hello everyone, welcome to the class. Good afternoon. I'm sure you all have this English worksheet, okay? So put back your science worksheet and take out your English worksheet. And for a minute, you can rest your mind, okay? Then we will begin. So after a minute, rest your mind for a minute, then we can start the class. That's like a transition. Okay. So everyone take out your English. I'm just writing 3-4 formulas here. Okay. So because we are going to do the future tense, you must have seen in the worksheet. Have you seen in the worksheet? We are going to do future tense. Okay. So I'm going to write some formulas for future tense, and then you can start working on the worksheet. Okay. So first we will write future simple. You also note down future simple. So how do you make future simple? What things do you add? Will. So this is like will plus base verb. This is how we make future simple. Okay. So
We will do will and any base verb. Okay. Now, next one, future continuous. will be के साथ continuous में क्या आएगा? Present participle. Now present participle is ing. Okay, so this will be verb 1 plus ing. Verb 1, like simple verb and then base verb and ing. Write down all this. Write down because you are going to start working on your sheet with this in mind. So future simple, will plus base verb, that is verb. Yes. हाँ जी बोलो बेटा. मैम ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਸੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ What? मैम जो आपने फर्स्ट टाइम मैम फर्स्ट वाली वर्कशीट थी ना वो आपने कंप्लीट नहीं कराई थी मैम सिडोनिया वाली. ओके ओके, तो कौन सी वाली थी फर्स्ट वर्कशीट? मे आई नो? सिडोनिया व्हिच वन? सिडोनिया वाली. एक सेकेंड. लेट मी. It was back to school. Which worksheet was it? Let me check. It is not completed. Let me check. Let me check. Let me check. This one. Okay, this one. Yes. Okay. The verb one. But you had to write, like, we had written down all the words and now you had to write a paragraph in 40 to 50 words. Okay? This is the one, this one. But no, that's Sidonia. Okay, let me check. Which one? I am a little confused. Which one are you asking? Please freeze the camera. I am showing you which one the worksheet is here. Okay, today we are actually, your teachers had, that is, I don't have that worksheet with me. Which one is that worksheet? Okay, you have the synonyms and antonyms. Yes. So we had not finished the back one. Yes, ma'am. This one. Okay, so we can do this one also. You only have to write down. See, we had written down, I think so we had done all this synonyms. You had done it? Yes? Say the children. Yes. The only thing is you have to now replace the words, like it was a beautiful day. So we ran to the park. Okay. Now let me tell you what you have to do. Okay, like it was, let me now this. It was a beautiful day. .
day. So we ran to the park. Now what you have to do is, this is underlined and this is underlined. You have words. You have synonyms for beautiful. You have synonyms for ran. Okay. So you can choose one synonym and replace it. What you can do is, it was a lovely day. You can make it a lovely day. A wonderful day. You can do wonderful. ये बच्चे अभी आपने खुद करना है. We can discuss this. There's no issue. But now you should do it yourself, because it's not like spoon feeding. Okay, you should know this. So it was a wonderful day and we ran. Ran को हम कौन सा, we had used the word dashed. Scooted. What else we had used? Which words we had used? We dashed. We ran to the park. की जगह ran की जगह हम कोई word वहां पे fit कर देंगे. Okay, this is how we are going to do this. And you are going, because we have done the verbs and the synonyms for all of them. हमने सारे खत्म कर दिए थे till the last one. Have we finished for puppy and long grass? Did we finish or we did not? Okay, what you do is, this is exactly what you're supposed to do. So you will replace the synonyms. You will choose the exact, like a synonym which really fits well, and then you will write down that and you will finish it. Okay, like I was angry at my friend because she was mean to me. अब angry. Okay, angry को आप किससे replace कर सकते हो? And mean. So what can you write? Angry. What are the words given? What are the words given for angry? Bolo abhi. I can't stay like this. Like, you have to now tell me the words. That day we did a lot of words and now you're not even telling me which words you did. Angry के हमने कौन से words निकाले थे? बताओ. Offended. Annoyed. So आप कोई भी, I was offended at my friend, annoyed with my friend, like, you can use these words. Or what else can you use? Vexed, furious. We had used furious. So you can use angry को replace करना है, and mean के लिए you can use the word cruel. You can use the word she was cruel with me. Okay. और क्या बना हमने, और कौन से words लिखे थे? Rude. She was rude. Mean की जगह you can write rude. You can write nasty. 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 So this is how you can choose the words and then fill it. I think so you will be able to finish this. Will you be able to do this? If you can do this, raise your hand. If you can finish this yourself. And when we meet in the next class, we can discuss it. I think so all the words are there. You only thing is you have to choose the right word and put it there. Very good. Anyone who says, no, I can't do it, raise your hand. Anyone who says, I can't do it. Okay. Is there anyone who is unable to do this? You have all the words. Only thing is you have to now change. Like beautiful has become lovely day. Ran has become dashed. It was a lovely day, so we dashed to the park. It was a wonderful day, so we scooted to the park.
Okay, so you can write down, and you already have all the words with you. Now take out today's worksheet because I want to do that with you. Okay, so who was talking to me? That child, come again to the mic. Come again, beta. Come, bache, come to the mic. Yes. Okay. So are you okay with this now? Yes. I'm sure you will be able to do this, because only thing is you have to choose a word and replace it and rewrite the sentence. Do it, and in the next class, remind me again, because now I'll remember you're from Pythagoras house. And what's your name, bacha? Paras. Paras. Okay, Paras. So when we meet for the next class, you remind me again, and we'll definitely solve this. Okay. So today I want to do, because it was a request that your exams are coming soon. You'll be writing your exams, and so you need some little bit of revision practice. Okay, so that's why we are doing this. Okay. Okay, but yes, I'm sure you will be able to do this. I know it's fun. Even I enjoy it. Okay, so here we are with these two. Sorry for switching you back and forth. I hope. So now you have future perfect. Okay, so we have the third one is we have future perfect. So how is future perfect? We use third one. Okay. You all know that for perfect tense, what do we use? Has, had, and have. Okay. Any kind of for perfect tense. Okay. So it depends whether it is past tense. So we'll have had, present it will be has, and for future it will be have. Otherwise also have also is there. Okay. So future perfect will have. This is will have plus. Now see, one thing you must have observed, will. So will be, will have. This is the change. So will have. Now see, here you have present participle because it is continuous ing. Here you will have verb plus ed. Verb 1 based on will have plus ed. Okay. So write down this in your sheet so that it becomes like you can look at it whenever you're confused, and you can do it. Okay. Now, next is future perfect continuous. Future perfect continuous. Okay. So now continuous होगा तो ing होगा, perfect होगा तो have होगा, future है तो will होगा. So this is, it is going to be. So will have been. It is going to be will have been plus, tell me, continuous है तो present participle. So present participle is base verb plus ing, and this is how. So one thing you have to see in future, will be, will have been. Okay, so this is, if you remember, you will never make a mistake.
You will never make a mistake. So कोई भी future tenses में will तो आएगा ही. Okay, will is going to be there, and for continuous both perfect continuous you will have ing verb present participle, and perfect we already know it has to be past participle. So verb form का ed आएगा, talk है तो talked आएगा, and यहाँ पे talked है तो talking आएगा. Okay, so this is how you're going to do it. So note down these and start working on your worksheet. I'm sure you'll be able to do it very, very well. Okay, I'm 100% sure. Yesterday when I had class 7, they did wonderful. So I'm sure even this group is going to do amazing today. I can do the first one for you if you want, future simple. The first one, we start with a very simple one, future simple. She blank win the competition. Okay, very good. Pascal, the girls with the green t-shirt, you can come out. Middle row. Middle row. Aaja, फटाफट. आओ बच्चे. Future simple. Because it's a question, so it has to start with a question word. You must have this question. Yes. Will she win the competition? Perfect. Will she win the competition? Okay, very nice. Because it's a question, it has to begin with a question word, end with a question mark. Okay, and so question word, will she win the competition? Will to aayega hi aayega because it's future tense. Okay, now the next one, future continuous. Okay, future continuous is this, will be plus ing. Plus ing. Who will tell me? You will never make a mistake if you follow this. There will be no scope for mistake. Okay. Ramanuja, middle row. Aaja beta. First, second bench, you've raised your hand. Sometimes, I can't see in the corners of the class. Sometimes I can't see in the center row is always visible. The side wali rows है उसमें कभी-कभी गड़बड़ हो जाती. Okay. So future continuous. He will be waiting when they arrive. She will be Waiting when Very we good. arrive. very good. She will be waiting. Wait का waiting हो जाएगा when we arrive. Perfect. Very nice. See, no mistakes are happening today. Third, future perfect. Future perfect. See this. Will have plus ed verb. Whichever verb is it, you will have to make it ed. Past participle. Okay, anyone from Thales? From Thales? Anyone? From Richardson? Richardson? There is nobody? Napier? I know. Pascal House, everybody. So I have to clap for Pascal House. Very good. Okay. The girl who's the neighbor of the green t-shirt girl. You come out. Now you should get a chance. Then everybody will get a chance. Whoever is raising the hands. Okay, we have enough. Yes. Okay. Future. By next week, I finish this verb. Bolo. By next week, I very good. By next week, I will have finished, because finish and ed finished my work. Very good. By next week, I will have finished my work. Okay, next. Future perfect continuous. This one. Now follow this rule. Future perfect continuous will have been plus ing form क्योंकि continuous है. Okay. So future perfect. I live here for 1 year next week. I live here. Yes. Who will tell me? Yes. There is a girl in HD. Which is that HD house? एक मिनट मुझे देखने दो यहाँ पे. Hilbert. Hilbert.
In Hilbert, I can see on my right. On the last bench, there is a girl. Corner. She's sitting and raising her hand. Yes, yes, yes. You turn around. Aajo beta. On my right, your left. Aapka left, mera right. Yes, come. Last bench mein, there is a girl sitting all by herself. Okay. If you're not coming, yes. Now you raised your hand. Aajo bar. Come. Aajo, aajo. Next, from Hilbert, I will invite the girl who's sitting on the first bench. Okay, for the next sentence. So future perfect continuous. Apna mic on kar lena. Check if your mic is. Sometimes I can't hear because your mic is not switched on. So please, yes. Bolo, Hilbert. Why aren't you? Yes, Hilbert. I can't hear you. Is your mic on? Please check. Because I am unable to hear a word. I will have been live here for 1 year next week. Perfect. I will have been live ka living ho jayega. ing live is the verb. ing living here for 1 year next week. Okay. So this is it. Now start doing from 5th to 10th. Then we will call out people. Okay. From 5 to 10, do it. Then I'll give you like 5 minutes. Not even 5, 3 minutes. I think so you can do it in 3 minutes. Yes, Richardson, I can see hands raised. Very good. There's a girl who's sitting on my right and your class left, and she's raising her hand. Very good. Okay, last bench. Ajo. The fifth one. The fifth one, future simple. Exam. Who, because it is like a question. So who will pass the exam? Yes, who will pass the exam? Who? It has to start with a question word. Okay. So who will pass the exam? And future mein aapne one thing is for sure. You all have to see that it has will in it. Okay. Next. Future perfect continuous. It is perfect and continuous. So perfect है तो have आएगा, continuous है तो ing वाला verb form आएगा. She blank study, so she will be tired. Okay, Pascal House is all jumping. Hilbert, first bench, आजा. Hilbert, first bench, middle row. Come. आजा, आजा, आजा. Future perfect continuous. She will have failed study, so she will be tired. Very good. She will have been. Future perfect continuous. Will have been. And this study has become study. Perfect. Very nice. See, you all are getting everything correct. I'm sure you all will get all the answers right. Okay, next time I'll give you some challenging, real challenging ones. Without yeah. Very good. Next one. Future continuous. How you get home. Continuous hai. Continuous. So you have to use will be. Who will answer this? Okay. Napier, I can see hands raised at the on my left. On my left towards the window. The road towards the window, I can see a hand raised. Yes. Aaja beta. Very good. Future perfect continuous. Future perfect continuous.
Bolo beta. She will have been studying, so she will be tired. Very good. She will have been studying. Will have been studying. Study is ing. So she will be tired. Perfect. Very nice. Very good. I'm so happy. Okay. Next. Seventh one. Future continuous. So easy. Easy breezy. I think so. There should be at least 50, 60 children who should raise their hands. Not only like 10, 12. I think so. This should be like a piece of cake for everyone. Okay? Who doesn't think it's a piece of cake? Yeah. Okay. Hardy. Hardy, I want someone from Hardy house. Middle row. Hardy house. Middle row. Yes. Come, little girl. Aajo beta. Aao. You raised your hand. Future continuous. We Yes. get How? Well, it's a question. So, how you will be getting home. Very easy. How you will be getting home. It's right there. How you will be becomes getting home. Perfect. Very easy. Next. Future continuous again. Who will answer this? ये तो मुझे चाहिए कि पूरी क्लास हाथ Pascal house. Yes, on the Pascal house or Pascal room, whatever. The boys, I can see an arm, outstretched arm. Yes, come out, come out, come out, come out. Aajo, aajo, aajo. John will be sleeping at 4 a.m. Very good. John will be sleeping at 4 a.m. Very nice. Okay. So, next, ninth one. Future perfect. Future perfect. Hardy, first bench. Yes, the girl who answered was ki neighbor. The girl who answered earlier, a neighbor. Future perfect. They will not have completed the report by 5 p.m. tomorrow. Very nice. Clap for yourself. If you have get the right answer, अपने लिए खुद ही clap कर लो. Okay? Very nice. Next. Next is the 10th one. Future perfect. Future perfect again. Who will answer this? Future perfect. ये देखो सामने. Will have plus ed. Verb ed. Pascal house. Green t-shirt girl. Middle row आ जाओ. You're shining bright among all whites. Yes. Bolo. Dinner by 8 The 10th one. The 10th. Will you have dinner by 8 p.m.? Will you have had? But it's perfect. Will you have had dinner by 8 p.m.? Will you have had dinner by 8 p.m.? Everybody, if you have written it wrong, you make a correction here. Will you have had dinner by 8 p.m.? Good attempt. Good. You just missed one word, had. Very nice. Good. I really like children who come forward. Okay? Very nice. That's like an effort. When you make an effort, you learn. When you don't make an effort, passive listening, kuch nahi aata. Next one. Future perfect continuous. Future perfect continuous. Ramanuja. Okay. Middle row. Sitting at the back. Second last bench. Aaja. Future perfect continuous. How long you have been working when you retire? Okay, ma'am. How long will you have been? Okay. Will you have been working here when you retire? Very good. Nice. How long will you have been? Okay, थोड़ी
This we have to understand when we have to add yeah, because when we are asking a question to somebody, तो you तो आएगा उसमें. Okay. So how long will you have been working here when you retire? Next, future perfect. Future perfect. Okay, Hardy House. Anyone from Hardy? I can only see 2 hands raised. First row, middle row, first bench. Baki kahan gaye? So okay. Everybody is sleeping? Okay, I can see a hand raised. Yes, Hardy House. Towards my left. Towards my left. Yes, Ajo beta Ajo. The boy who stood. Both the boys who stood. Both of you come out. Both. There's another boy who stood. Yes, you also come out, beta. You're standing. I can see only partially. I can see you. You also come out, bache. Yes, you also come out for the next question. Okay. Can see you do everything that you want to. No, 12th wala. Beta 12th wala. Future perfect. Future perfect. Because it is a question, it starts with when will you have done? Can see you do everything that you want. It's 12th one, future perfect. When will you have done everything you want to? When will you have done everything you want to? Okay. So that is future perfect. You wanted to. Okay. Next. 13th, future simple. The simplest one. The other boy who was called out, he can say this one. The other boy who was called out, I called out 2 boys. So the other one. Not ready? Okay. Yes, Napier. I can see a hand raised in the far corner. Blue t-shirt. Ajo. Come. Shabash. Very nice. Richardson, these 2 girls, you want to answer, beta? Who came back to their seats? If you want to answer, you can come and answer the next question. Okay, Richardson? Yes, bache. Bolo. Take care of the staff to the party. 13th wala, 13th. They will. He will have been not done work here for 3 years. 14 years. They will not be able to arrive on time. ये 13 तो ये है. They will not be able to arrive on time. आपने 13th कौन सा कर लिया बच्चे? They will not be able to arrive on time. Yes, they will not be able to arrive on time because simple future है. Future simple है. It's negative. Not. That is why it is negative. Okay, so we have future, like all the 4 future tenses, we have negative and we have interrogative, questions also. Now the 14th one. The 14th one is future perfect continuous. Future perfect continuous. कौन आएगा? Who will come? Who will brave it out? He will be not been he will have been not work for 3 years next month. एक बार बच्चे और repeat करो. एक बार और. Please repeat it one more time. He will have been not work for 3 years next month. Okay, there is a small mistake here. He will not have been working. Okay, it's not like he will have been not, because no, not, he will not have been working here for 3 years next month. So not का आपकी position जो थी वो गलत थी, and in grammar, if that is wrong,
you will get a wrong because there is no half marks in grammar. So be careful about this, okay? So he will not have been working here for 3 years next month. Thank you. Very nice. Next, 15th, future continuous. Future continuous. Why do I see the same children raising their hands? Why are other children not raising? Okay, nobody from Napier. First bench. The boy sitting on the first bench, middle row. Aa jao, jaldi aao. Yes. 15th one. Future continuous. Fifteenth is future continuous. Simple. Future continuous will be plus ing. That's it. Will she be taking her car to the party? Very good. Will she be taking her car to the party? Okay. Pascal, middle row, there is a girl who has raised her hand. Back, she's sitting on the second last bench. Aa jao. Middle row, second last bench. Come. So, next. Future perfect continuous. Future perfect continuous. They not exercise before we meet. They will have been not exercised before we meet. Could you repeat it again? They Will have been not exercised before we meet. बेटे future perfect है तो will have होगा ना? So it will be they will not have been exercising because it's continuous. Okay, before we meet. They will not have been exercising before we meet. Pythagoras, why are your sheets going back into your folder? You don't want to complete? Complete your work. You're just left with 3 more. Okay, so they will not have been exercising before we meet. Next one, future perfect continuous. Future perfect continuous. Okay. Richardson, middle row, there is a girl who has raised her hand. Aaja bachche, come out. What will you be doing before dinner? What will you have been doing? Okay? Before. Yes, what will you have been doing before dinner? Okay? Next, future simple. सबको आता है. Okay? There is a question. You drive here. So, very good. Okay, Richardson, I can see hands raised at the back of on my right. My right. Aajao bete, you're sitting by the wall, hand raised, a little girl. Aajao, fatafat. Future, what time you arrive? Sorry, this is future simple. Simple. Follow beta, Richardson. You will drive here. Will you drive here? Because it's a question mark, so it has to begin with a question word. Will you drive here? Very nice. Future continuous. Future continuous में will be plus ing verb. Will be plus ing verb. Okay, future continuous. What time will you, because we have to ask, okay? Yes. What time will you be arriving? What time will you be arriving? This is your 19th and your last one. Who wants to do the last one? Who wants to come forward for the 20th one? Okay, anyone interested? Nobody? That's bad. Okay, I can see someone raising hand from Hardy. Hardy, please come. You have raised your hand. I can only see the hand. Jaldi se aa jao. Future perfect. She cannot have finished the cleaning by the time she gets home. Perfect. Very nice. Very nice. So we have finished with this worksheet. And Paras from Pythagoras' house.
Paris? Yes, I can see you. You're sitting in the middle row. Yes. What, Paris? No, I just wanted to talk to you and tell you that next time we will definitely complete that worksheet. Only thing you all have to do is you have to replace the words. And this is the way to show that different words can be used. Beautiful ki jagah, we can use so many different words. Bright day ki jagah, we can use so many different words. So it is like that, and so that is, we'll definitely complete that work. Okay, and thank you for reminding me, Paras. Thank you, and we can do it next time. Okay, so have a good day. I hope you all enjoyed. Have a nice day. Yes, you too. Thank you very much. Thank you for a wonderful class.